Hello everyone, welcome to your favorite channel, that is Maths Pathshala. Today we'll be discussing elimination method to solve the linear equations in two variables. So let us start with the questions. Exercise 3.4, that is question number 1, first part, that is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. So how we proceed with the elimination method is, in the substitution method which we have done in third exercise, that is, in case of substitution method we need to find out the value of one variable from either of the equations and then put the value in another equation. But in case of elimination method, what we do is we make the coefficients of either of the variable to be same. Either by multiplying or by dividing, you have to make the coefficients of the variable to be same. Either of the variable, not both. Either of the variable to be same. If the coefficients have same sign, that is plus plus, suppose, then all same sign, then we have to subtract. If they have alternate sign, like if the x has the coefficient which have the positive sign and another equation have the coefficient of x as a negative sign, so we have to add them so that they will be cancelled and one value of the variable can be found out. So what we will do here is, let us take the two equations, first and second equation. Now see here, the coefficient of x here is 1, the coefficient of x here is 2. The coefficient of y here is 1 and y here is minus 3. So what we can do is, we have to make the coefficients to be same. So how can we make same? If I multiply equation 1 by 2, so the both will be same, coefficient of x will be same. And if I multiply equation 1 by 3, then y coefficient will be same. So it is up to you whether you want to make the coefficients of which variable to be same, either of the x or of the y. If I make the coefficient of x to be same here, then they have same sign, positive and positive, so they will be subtracted. And if I will multiply this equation by 3, then this will become 3y, it is minus 3y, so we have to add. Alternate sign, addition, and same sign, we have to subtract. So let us multiply equation 1 by 3. अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 3x plus 3y is equal to 3 into 5 is 15. Now we have got one more equation, that is equation 3rd. Now we can add both of them, add second and third. क्यों ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सो 2x minus 3y is equal to 4 and 3x plus 3y is equal to 15. कैंसिल हो गए. 3 plus 2 is 5. X is equal to 4 plus 15. We have got 19 here. So what I have got here is x is equal to 19 by 5, and now we have got the value of x. Now we'll substitute the value of x in any of the equations. I will get the value of y. So put the value of x in equation first. Now if I'll substitute, what will I get? 19 by 5 plus y is equal to 5. So y is equal to 5 minus 19 by 5. So y is equal to, LCM will be 5. So it will be
25 minus 19. So 25 minus 19 is 6. So y is equal to 6 by 5. So this is how we can use our elimination method. So we have got the value of y as 6 by 5. Now let's move to the second part. Now the second part is 3x plus 4y is equal to 10. 2x minus 2y is equal to 2. Now let it be equation 1 and let it be equation 2. Now we have to use elimination method here. Now see here. If I see the coefficient of x in first equation, it is 3 and here it is 2. If I see the coefficient of y, here it is 4 and here it is minus 2. So can I make it minus 4 by multiplying it with 2? अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये माइनस 4 बन जाएगा और ये प्लस 4 है और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये कैंसिल हो सकते हैं. सो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 2 बाय 2. सो मल्टीप्लाई equation 2 by 2. So what will I get? We have to multiply by 2. We have to multiply the whole equation, not only the coefficient of y. So 2 into 2 is 4x minus 4y is equal to 4. Let it be equation third. Now what will I do? I will have to add. So add 2 and 3. So 2x, sorry, I have to add first and third equation because we have got this equation here. So what will it become? 4x, or you can say 3x plus 4y is equal to 10, and here you have got 4x minus 4y is equal to 4. Now we have to add them, so they will be cancelled out. So you will get 7x equal to 14. So x is equal to 14 by 7. So you will get 2. So x is equal to 2 here. Now we need to find out the value of y. So what will I do? I can put the value of x in either of the equations 1, 2 and 3. So if I'll put in first equation, put the value of x in equation 1. So what will I get? 3 into 2 plus 4y is equal to 10. So 6 plus 4y is equal to 10. So 4y is equal to 10 minus 6. So 4y is equal to 4. So y is equal to 1. So we have got the value of x and y by using elimination मेथड. एलिमिनेट का मतलब ही यही है कि आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग, मेक द कोएफिशिएंट्स टू बी सेम. नाउ द थर्ड पार्ट इज let's move to third part. 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7. So first of all, let us make the standard form of it. So what it will be? 3x minus 5y is equal to 4. 4 उधर ले गए और यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9x minus 2y is equal to 7. Let it be equation 1. Let it be equation 2. Now see the coefficients. x का coefficient 3, x का coefficient 9, y का coefficient -5, y का coefficient -2. तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा x का coefficient सेम बन जाएगा और दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव, सेम साइन है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को. सो व्हाट आई विल गेट? 9x माइनस 5 3 15y इज इक्वल टू
12. So let it be equation 3. Now what I will do, I will subtract this and this equation. So subtract equation 2 from 3. So third equation is your 9x minus 15y is equal to 12, and this is 9x minus 2y is equal to 7. और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये बन जाएगा प्लस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया. नाउ माइनस 15 प्लस 2 विल बिकम माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज योर 5. तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, -5/13. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों में से कहीं पर भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो. सो पुट द वैल्यू ऑफ y in any of the equation in either 1, 2 or 3. So let us substitute the value of y in equation 1. जब हम 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4. सो 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4. सो अगर मैं यहाँ पर LCM ले लेती हूँ या इस वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13. So 3x is equal to 13 is the LCM. So 13 is the LCM. So 13 into 4 is your 52 minus 25. So what you will get, 3x is equal to 27/13, or you can say 3x is equal to 27/13 into 3. So 3 से 27 कैंसिल हो गया, what you will get 9. तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 9/13. Now you have got the value of x and y by using elimination method. What I have done here is I have eliminated the variable x here by subtracting the equations. Now let's move to the fourth part, which is the last part of question number 1. Fourth part is x by 2 plus 2y/3 is equal to -1, and second equation is your x minus y/3 is equal to 3. Now these two equations, they are not in the standard form, so first of all we have to convert it into standard form. So what I will get, LCM will be 6, so this will be 3x plus 2 and then 4y is equal to -1, or you will get 3x plus 4y is equal to -6. Let it be equation 1. यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन तो क्या बन जाएगा, 3x minus y is equal to 9, because 3 you will take the LCM, so this will be 3x minus y and 3 3s are 9. So this is your second equation. अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट आपका 3 है, तो दोनों ही 3 3 है, सेम साइन है. तो क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. मुझे किसी भी इक्वेशन को किसी भी वैल्यू के साथ या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही के कोफिशिएंट्स सेम हैं. सो व्हाट विल आई डू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. सो व्हाट विल आई गेट, सेकेंड को माइनस करना है फर्स्ट में से, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 9. सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका. ये क्या बन जाएगा, 5y इज इक्वल टू -15. तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/5. सो यू विल गेट 3. सो y इज इक्वल टू -3.
y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6. So 3x minus 12 equal to minus 6. So 3x is equal to minus 6 plus 12. So 3x equal to 6. तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/3, that is 2. So we have got the value of x, we have got the value of y by using elimination method. Remember that elimination method means to eliminate either x variable or y variable. It is up to you that you will make the coefficients of x to be same and y to be same, but you have to remember if they have same sign, then you have to subtract. If they have alternate sign, you have to add. Now let's move to question number 2, first part. Now question number 2 is based on your word problems. So word problems, statement based questions. So from the statements, first you have to make the linear equations in two variables and then you have to use elimination method. Now first part is your, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. And it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator. So what is the fraction? So what we have to find out, so we have to consider that the fraction to be x by y. Let fraction be x by y, where x is your numerator and y is your denominator. Now let's look at the statement according to the question. What it says if we add 1 to the numerator, अगर मैं numerator में 1 add कर दूँ और denominator में से 1 minus कर दूँ तो मेरा जो fraction है वो 1 बन जाता है. 1/1 और 1 is one and the same thing. Now you have to cross multiply. So what you will get, x plus 1 is equal to y minus 1. Now make it a standard form. X minus y is equal to minus 1 minus 1. So x minus y is equal to minus 2. Let it be equation 1. Now the second statement says if we add 1 to the denominator, अब न्यूमरेटर को कुछ नहीं छेड़ना है, वो सेम है और हमने डिनोमिनेटर में y 1 ऐड कर दिया है तो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 1/2. Now what will I do? Cross multiply. So you will get 2x equal to y plus 1. So 2x minus y is equal to 1. Let it be equation 2. Now see here, x का coefficient 1, x का coefficient 2, y का coefficient -1, y का coefficient -1, दोनों सेम आ गए तो मुझे इक्वेशंस को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँगी. तो व्हाट विल आई डू, सब्ट्रैक्ट, और वो आपकी मर्जी है, आप 1 में से 2 को माइनस करो, 2 में से 1 को माइनस करो, आपका आंसर सेम ही आएगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. So second equation is this. So 2x minus y is equal to 1 and x minus y is equal to -2. सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया. यहाँ क्या आएगा, 2x माइनस 1x इज x और यहाँ पर 1 और प्लस का 2 तो 3. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज 3. अब मुझे निकालनी है वैल्यू y की, कहीं पर भी पुट कर दो. लेट अस पुट इन दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करूंगी. x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2. सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5. माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5.
Now we have got the value of x, we have got the value of y. So this is a statement based question, word problem. So you have to give the answer that therefore fraction is equal to x is 3 and y is 5. So this is your answer. I hope the elimination method is clear to all of you. In the first question we have done elimination method, but you have to solve the questions by elimination method as well as by substitution method also, which we have already discussed in exercise 3.3. So you can do the questions based on substitution and elimination method, and one word problem we have already discussed, and 4 more word problems we'll be discussing in the next session. Thank you. Hello friends, I hope you all like my videos. If you feel any problem, you are free to write in the comment section. I'll answer you as soon as possible through my videos. So like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.